Hi guys, my name is Prateek Jain. And before we jump into the video, I wanted to give you a very quick introduction about myself because this is going to be my first video on YouTube. I have overall 6 years of experience into data analytics and data engineering. I've been working with multiple startups and a few MNCs as well. This video is going to cover an introduction to SQL and databases, which are mostly theories. However, in my upcoming videos, we will learn more about how to solve trick questions and difficult questions of SQL, which will help you crack interviews as well. I hope you learn a lot from my videos and feel free to drop in a suggestion or a comment after the video. Thank you. So there's a very important thing that you have to learn about data analytics, which is कि हर company में data analytics is treated differently, and you may or may not find commonality between every company. For example, I think in a startup, data analytics includes a lot of things other than just analytics. So this is the sort of thing that a data analyst does: automations, analytics, and इसीलिए because of these automations you need to understand databases and Python and a lot of other tools as well. एंड अगर इसमें हम बात करते हैं कि ओके आपको कल अगर आपको सो ओके अगर हम नॉर्मल पावर बी आई की बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, उस केस में क्या होता है, आप यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल, राइट? तो अगर आप सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट फोकस करना चाहते हो, then you can skip all of this and directly work on Power BI and Tableau also. But उस केस में you limit yourself into only a tool based learning. So आपको फिर रोल्स जो मिलेंगे वो विल बी लाइक पावर बी आई स्पेशलिस्ट, पावर बी आई डेवलपर और टैबलो डेवलपर एंड सो ऑन. बट उसमें फिर आपसे एक्सपेक्टेशन चली जाएगी दैट यू हैव टू ऑटोमेट थिंग्स और यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा बेसिस, क्वेरी टेबल्स, गिव डेटा टू पीपल एक्सेट्रा. तो आप सिर्फ डैशबोर्डिंग करके यू विल बी डन, राइट? सो दिस इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डेटा एनालिटिक्स वर्क्स एटलीस्ट इन इंडिया. इंडिया के बाहर काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं because in the US or in the UK, processes are a little more standardized and formalized. But in a startup in India, you will find that the analytics team is expected to do one thing and everything. Right? You will be starting with sending data, but उसके साथ आपको बोलेंगे कि आप automation भी कर दो और आप या फिर कुछ भी automate कर दो, right? Everything that can be done by code will be expected out of you. तो बहुत ही wide arena है. Which is why in India the courses that you see will be a lot more technical for analytics. Which is so in at least my suggestion, Python is something you should go for. Or if you skip for now, you will not miss out on anything. So databases is anything that where you store your data. Okay? For example, in Amazon, you have everything which is related to users, products, orders, or transactions, right? Because इतना सारा volume का data है, you need to store it somewhere. So that even if tomorrow you need to change anything in the application, आपको वो data migrate करने में easy हो, right? So data is like a block storage. तो अब यहाँ पे for example मैंने ये box बना दिया and this box is like a block, right? तो इस block में आप data डाल सकते हो and you can have n number of tables in it, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है in this particular section. So this is how a table can be, sorry, a database and tables can be visualized, right? तो inside a database you can have multiple tables. मैंने यहाँ पे I think 15 tables बनाई है, but you can have 100 also, you can have 200, there is no limit to it. तो कल को अगर आपको इसमें और tables add करनी, you can. And usually these tables are in one way or the other connected to each other. हो सकता है कि table A in itself is connected to F and maybe F is also connected to G and maybe G is connected to M, right? So there is no limit to how many tables a table can be connected to. So we can actually create relations between tables. Because of these relations, we can actually create different types of data sets as well. So for example, in case of an e-commerce website, if you have a customer, you need to map an order to a customer. तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर हमारी टेबल ए इज़ ऑर्डर्स एंड टेबल एफ इज़ कस्टमर्स, तो ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स विल बी लिंक टुगेदर. तो इन दिस केस क्या होगा कि ऑर्डर्स की टेबल में दे विल बी अ कस्टमर आई डी and the customer ID is basically the ID for this table. So every table is actually assigned with a unique ID. उस यूनिक आइडिया का काम ही होता है दैट फॉर एवरी रिकॉर्ड इन दैट टेबल उसको एक आइडेंटिफायर मिल जाता है. तो जिससे अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो एवरी ह्यूमन बीइंग इन एवरी कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. हमारे पासपोर्ट नंबर्स, आधार्स, ये सब हमारी यूनिक आईडीज़ हैं.
सो इफ़ यू टुमारो हैव टू गो लेट्स से टू अप्लाई फॉर अ न्यू लोन, तो आपका जो पैन है दैट विल एक्ट एज एन आई डी फॉर यू, एंड आपके पैन से वो लोन लिंक हो जाता है. So in the similar fashion, every table has a unique, every record in a table has a unique ID, and that ID can be then further used for other use cases. तो ये कस्टमर्स की आईडी जो है, इससे हम ऑर्डर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है कि हमें इसमें कस्टमर्स को आपको पेमेंट्स भी लेनी होती है, राइट. सो मे बी दिस इज़ द पेमेंट्स टेबल, एंड इसमें भी कस्टमर आईडी से कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू लिंक पेमेंट्स टू कस्टमर्स. क्योंकि कल को कस्टमर मांगता है कि मुझे हाउ मच मनी हैव स्पेंट ऑन द ऐप और वन ऑर्डर, यू कैन एक्चुअली गो डायरेक्टली एंड टेल देम without going to your orders table. So in general, this is how a database or a table works. So before we move on to the types of databases, right, we'll discuss something about asset properties. So what are asset properties is? Asset is actually a terminology which we use commonly when we define databases. Uh, Basically it means, so A is standing for atomicity. Now what is atomicity? Atomicity is a concept where we say that whenever a transaction happens in a database, it either happens completely or it doesn't happen at all. Now what does that mean? It means, for example, you have two transactions. A transaction is any operation that you're doing in the database, right? It could be anything. Now let's say that this is one transaction wherein we have two sub transactions of T1 and T2. This is a single transaction T. In T1, you're saying that an X person wants to send money to a Y person here. X, so let's say the amount is 100 rupees. So X minus 100 and Y plus 100. This is what will happen in this transaction. Right? Now in a case where let's say we do not have atomicity in the transactions, what will happen is, let's say कि X minus 100 is successful, ये हो गया, but this failed. Right? If we do not have this atomicity principle being followed in a database, what will happen is कि डेटाबेस में x का बैलेंस -100 हो जाएगा बट y का +100 नहीं होगा. सो इट विल कॉज एन इशू इन द डेटाबेस, which is why whenever we do transactions in a database, we follow this principle that जब भी transaction होनी है, it will either completely happen or it will get discarded from the memory itself. So it will fail. So very common example of this case is a UPI transaction. अगर आपके पास डेबिट हो गया बट मेरे पास क्रेडिट नहीं हुआ, so it's not a valid transaction, which is why in a lot of cases you get the refund back. और अगर आपके में से डेबिट हुआ भी है तो otherwise in lot of in usual cases it will not happen at all. It will just show you that please wait for a while, or it got declined, something like that, because of any error. Then the second part of it is C, which is actually called consistency. This is sort of an extension of atomicity, which basically means that a database should at all times should be consistent in terms of data. For example, अगर यहाँ पे हमने x minus 100 किया था and y plus 100 किया था, the net transaction amount is actually 100 rupees only. तो अगर पूरे ecosystem में 200 rupees हैं पहले, तो after the transaction also it should remain 200. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे -100 हो गया बट यहाँ पे +100 नहीं हुआ तो वो इसका अमाउंट फिर 100 हो जाएगा, राइट. दिस इज वॉट कंसिस्टेंसी मीन्स. देन वी गो ऑन टू आई, विच इज कॉल्ड isolation. Now isolation principle says that multiple transactions can happen at a single time. For example, कि this is transaction 1, sorry, this is T1 and this is T2. यहाँ पे okay, for this we can define that x is let's say 500 and y is let's say also 500, and in T1 we are first reading the value of x, then we are doing an x is equal to x into 100, ठीक है, and this basically means कि 500 का 50,000 हो जाएगा. Then we are writing the new value of x, then we are reading the value of y, and we are doing some operation in y which is let's say y minus 50, and then we are writing the value of y. Similarly T2 में we are doing a read of y, and let's say
read of x also, and y में हम कुछ transaction कर रहे हैं, or anyway let it, maybe we are doing z is equal to x plus y, okay. And then we are writing the value of z into the database. Now what will happen if, let's say, ये वाला part हो गया reading of x is equal to x plus 100 भी हो गया, writing of x भी हो गया, then when we reading the value of y ये भी सही हो गया, and these are also all successful in case of transaction 1. But let's say somewhere here we also started a transaction 2 parallelly, मतलब multiple users हो सकते हैं, right, of doing a transaction. तो हो सकता है at this point आपका यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई, दिस गॉट सक्सेसफुल, बट वाइल यू वर रीडिंग एक्स ये अभी तक राइट ही कर रहा था एक्स को, तो इट इज़ पॉसिबल दैट इसकी वैल्यू इज़ नॉट अपडेटेड टू 50,000, इट मे स्टिल पे 500, राइट. तो यहाँ पे जो जेड का टोटल आएगा वो 100,000 आएगा, जबकि विच इज़ रॉन्ग, इट शुड एक्चुअली हैव बीन 50,500, बिकॉज हमने यहाँ पे एक्स को इंटू 100 कर दिया था, राइट. तो टू अवॉइड दीज सिचुएशंस we say that okay, every transaction should be isolated and it should be run independently, but at the same time it should be made sure that before each and every transaction is actually written into memory. मैंने y तक यहाँ पे calculate कर दिया, right, whatever answer I have I will keep it in my memory, but before writing it to the database I should let all the transactions complete. So what it actually looks like is कि पहले T1 स्टार्ट हुई थी, so पहले ये कंप्लीट होगी and then T2 will start, although in reality all of them are running parallelly. So as soon as T1 completes it will sort of recalculate T2 or replace the value of T2 according to what was happening in T1. This particular principle actually ensures that there's a consistency at all times in a database. Very common example of again of this is financial transactions. For example, आप दो पेमेंट साथ में कर रहे हो इनिशिएट, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये हैं, बट बिकॉज यू इनिशिएटेड इट ट्वाइस टुगेदर एट द सेम टाइम, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे होते तो यू कुड हैव डेबिटेड 2,000 रुपीज़ अगेंस्ट जस्ट अ 1,000 रुपी बैलेंस. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाई वी रिक्वायर आइसोलेशन, right? And then we have durability. Durability is just a simple concept. It means that for an entire database we should always have all the modifications, all the updates, all the inserts stored in a persistent database, in a persistent storage. तो storage is anything, for example आपका कंप्यूटर का storage है, your SSD, right, your HDD hard disk, तो ये सारी चीज़ें storage होती हैं, these are persistent. तो दीज शुड बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज सो दैट कल को अगर डेटाबेस फेल हो जाता है तो यू कैन ऑलवेज रिकवर फ्रॉम दिस, रिकवर एन एंटायर डेटाबेस फ्रॉम दिस. तो ड्यूरेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोर रिकवरी फ्रॉम अ सेंस. देन वी हैव RDBMS versus NoSQL. Now when we talk about databases, there are actually two types of databases. RDBMS stands for Relational Database Management System, right? DB, Database Management System, and NoSQL stands for non-SQL. It's very simple, NoSQL. Now I'll tell you the difference here, बहुत basic difference है, which is an RDBMS or a relational database is where we have structured data. So your data will look something like this, in a form of a table. This is your, it's a tabular format, so it's structured data. यहाँ पे ID आएगा, यहाँ पे name आ जाएगा, यहाँ पे status आ जाएगा, address, phone. So this is a structured database wherein one Pratik, active, Gurgaon, and my phone number. ऐसे ही number 2 पे कुछ आएगा, number 3 पे कुछ आएगा, and so on. So this is a structure, right? But in NoSQL there is no particular structure. We don't have a table in this. We actually have objects. तो इस object में ऐसा हो सकता है that number 1 has three attributes. Attributes are these: ID, name, status, address, phone. ये attributes कहलाते हैं. So you have 3 attributes, but हो सकता है in the second object you actually have 5 attributes. So it's not necessary for a NoSQL database to follow the same structure for each record. So this gives us a little bit of flexibility when it comes to writing when creating databases or creating data. तो इन सबके अपने अपने यूज़ केसेस हैं. Very basic differences are that
When this is structured, like I said, this accepts all data types. Then you have this. So RDBMS is more useful for complex transactions, where you need to where you have complex logics for the app and you want to run them. RDBMS is usually a better choice, and this is for simpler transactions. Then third difference you have is, so RDBMS, while it is good for for complex transactions, it is generally preferred for a low volume data. दिस इज़ अ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव टर्म. हो सकता है किसी के लिए लो वॉल्यूम वुड मीन जस्ट 100, बट किसी के लिए लो वॉल्यूम हो सकती है दिन की लाख ट्रांजेक्शन्स. सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर एंड इट्स यूजली सीन इन अ मोर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, कितना डेटा आना है, एंड इट्स अ कॉल ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स यू वॉन्ट योर ऐप टू बी, एंड दिस इज़ अ हाई वॉल्यूम database. This can actually have a lot of data. Now, why I said कि low and high is a very complex, is a very subjective term, because volume of data आप actually दोनों में कितना भी डाल सकते हो, but it is generally preferred that relational databases have data which is a little bit cleaner and it's a little bit mature. But high volume में और नॉन सीक्वल में आपके पास एक्चुअली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू पुट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट. देयर इज़ नो लिमिट टू how many attributes or what sort of metadata you want to add to it. Very basic example. Relational databases is usually used for, let's say, like an e-commerce platform. तो उसमें आपके पास orders होंगे, customers होंगे, products, right? Delivery related tables होंगी, transactions होंगी. These are all usually done under relational databases. But for non-relational databases, you actually have things like app logs. ये बहुत कॉमन यूज़ केस है. सो अब ऐप लॉग्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आप आज अमेज़ोन पे गए, तो सो अमेज़ोन इज स्टोरिंग अ लॉट ऑफ डेटा फॉर योर इनपुट्स. जैसे आपने एक बटन पे क्लिक किया, वो बटन का जो डेटा है कि आपने किस टाइम पे क्लिक किया, कौन से पेज पे क्लिक किया, कितने टाइम पे क्लिक किया, वो वैसा एक छोटा 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 सेट बन के इट कीप्स पुशिंग टू अ डेटाबेस. इट इज़ यूज्ड फॉर लेटर फॉर देम टू एनालाइज की ओके कस्टमर जर्नी क्या थी, या फिर अगर कल को कोई ऐप में एरर आता है तो दे वांट टू सी कि इस एरर से पहले क्या हुआ था. सो दीज सॉर्ट ऑफ लॉग्स आर एक्चुअली स्टोर्ड इन NoSQL databases. It can actually be stored in relational as well. It's more of a call of a data modeling call कि आपको क्या करना है. But in general, I've personally seen logs being stored in a NoSQL database because it's easier to store there. एंड आप लॉग्स की जो स्ट्रक्चर है, इट्स नेवर द सेम. हो सकता है कि यूज़र एनालिटिक्स के लिए लॉग्स अलग जा रहे हो, बट ऐप लॉग्स जो हैं जिसमें डेटाबेस के लॉग्स होते हैं या फिर कोड लॉग्स हैं, वो अलग फॉर्मेट में हो. सो यू डोंट नेसेसरली नीड फॉर इट टू हैव द सेम स्ट्रक्चर. सो we'll understand in this session, at least we'll understand more of RDBMS, क्योंकि NoSQL पे एनालिटिक्स इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. तो यूजली एनालिटिक्स हमारी RDBMS पे ही चलती है. Although it's not a hard written rule, but you will find कि RDBMS ही majorly यूज़ होता है where you can run analytics. तो एक सिंपल केस स्टडी है फॉर अ ई-कॉमर्स ऐप, ठीक है, जिसमें ये फीचर्स हैं दैट यू हैव टू ऐड प्रोडक्ट्स, यू हैव टू साइन अप कस्टमर्स, you have to enable customers to add product to a cart, and you have to enable customers to place an order and pay their money for the app. So for this particular purpose, you will actually need the following data sets. You will need a customer, you will need a product table, you will need a cart table, and you will need a orders or transactions table. तो इन चार टेबल्स से वी विल एम टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर फीचर लिस्ट कि हम ये सब कुछ ये सब कुछ हम चार टेबल्स में कर पाएँ, राइट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विद इज़ अ कस्टमर्स टेबल. ये कस्टमर्स टेबल हो गई. लाइक आई सेड एवरी टेबल हैज़ एन ID, तो ये ID हो गई यहाँ पे. देन यू हैव द कस्टमर नेम एंड देन यू हैव मे बी द जेंडर. इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अभी. वी विल जस्ट स्टार्ट विद 3 tables and then we'll create a products table. इसमें भी एक ID होगी, एक नेम होगा. इसको अभी इतने छोड़ देते हैं. we'll actually understand more. And then we will have, इसको यहाँ पर डालते हैं.
let's call it orders, and this will also have an order ID, and maybe the amount. Okay, and we will have what's the fourth table, the cart. Okay, so if you can see, every table has an ID, so these IDs will help us map these tables with one another. तो ओके, अकॉर्डिंग टू द फ्लो, पहले क्या होगा कि कस्टमर्स विल ऐड अ प्रोडक्ट टू देयर कार्ट, राइट? तो इन दिस केस वी नीड टू मैप द कस्टमर्स एंड द प्रोडक्ट्स टू अ कार्ट, है ना? तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट आईडी बनेंगे कॉलम. दिस इज़ अ फॉरेन रिलेशनल, दिस इज अ फॉरेन की. ये जो आईडी होती है दिस इज़ अ प्राइमरी की, ठीक है? So PK is primary key, FK is foreign key, and then you have a customer ID. So these two entries will actually be linked. So ये product ID will be linked to this, and this customer ID will be linked to this. तो ऐसे करके we can create a relation between these two. So now whenever you read the cart table, you will see one primary ID of the cart जो अभी आपके लिए relevant नहीं है, because it doesn't matter as long as आप उसको link करते हो. देन यू हैव प्रोडक्ट आईडी थ्रू विच यू कैन सी कि कौन सा प्रोडक्ट इस कार्ट में है, एंड देन थ्रू कस्टमर्स आईडी यू कैन सी कि कौन सा कस्टमर ने ये कार्ड बनाई थी. देन वंस यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, वंस यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, यहाँ पे हम कार्ट आईडी का एक वो बनाएंगे विच इज़ अनदर FK, एंड दिस आईडी, दिस कार्ट आईडी विल एक्चुअली बी लिंक्ड टू दिस. सो फॉलोइंग दिस मेथड यू कैन एक्चुअली क्रिएट रिलेशंस बिटवीन ईच टेबल. तो now each table is connected to each other in one way or the other. अगर आपको ऑर्डर्स टेबल से ये निकालना है कि ये ऑर्डर कौन से कस्टमर का था, तो या तो आप ये ऑर्डर्स में से कार्ट आईडी निकाल के एंड कार्ट आईडी को यहाँ पे क्वेरी करके आप कस्टमर आईडी निकाल सकते हो. नाउ टू अवॉइड सो मेनी क्वेरीज, मतलब आप डायरेक्टली भी निकालना चाहोगे, राइट? इन ऑर्डर टू अवॉइड इशूज़ लाइक कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑर्डर्स टेबल में अगर आपको कस्टमर आईडी चाहिए, राइट? तो व्हाट इंजीनियर्स डू टू अवॉइड थिंग्स और टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, दे विल ऐड अनदर कस्टमर आईडी हियर. कि व्हाट इफ मुझे डायरेक्टली सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स चाहिए, आई डोंट वांट द कार्ड डिटेल्स, तो आप तो फिर उस कस्टमर को इससे लिंक कर देंगे डायरेक्टली, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल लिंक्स ऑल्सो. तो एक डेटाबेस डिज़ाइन में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी टेबल्स रिक्वायर्ड है एंड हाउ दिस टेबल्स लिंकिंग विल हेल्प ईच अदर वाइल वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग फंक्शनैलिटीज़. तो जब भी हम अब नाउ वेन एवर द कोड इज़ रिटन फॉर दीज एप्स, तो ये लोग पहले क्या करेंगे कि कस्टमर आईडी को वेन एवर क्रिएटिंग अ कार्ट, they will pick up the ID from the product and the ID from the customer and they will add it here, and when placing the order they will just have to add one ID which is the cart ID to the orders ID, to the orders. And customer ID is an optional thing, although you can, but it's actually more preferable if you add it because it reduces your efforts in terms of mapping the customers. Because कल को आपको एक फीचर बनाना है जिसमें आपको कस्टमर को दिखाना है what all orders they have already done in history. So it's easier for your system to query basis the customer ID than going to cart first and then picking your customer. Now we'll understand the types of SQL statements. Okay. From an analytics perspective, you will use majorly this, which is data query language. Okay. And so the select statements is what you will usually work with. But from an educational point of view, it's better that you know some of this. So we'll start with this. Okay, so DDL is a type of SQL statement जहाँ पे you can create a table, you can alter a table, or you can drop a table. So these work in a very high level. But okay, sorry, इसका full form भी होता है data definition language. Okay, so data definition language is where you define a table. तो if you want to create a customers table, you can say create table as customers. तो वो आपको एक table create कर देगा. You can also alter tables, you can also drop tables. अगर आपको table चाहिए नहीं अब तो उसको drop कर दो. These are actually useful for more development perspectives. As an analyst, you will not use them because you will majorly not use them because आपका काम is more reading the data and analyzing things. Then you have DML, which is data manipulation language. Now आपने table create कर दी और उसमें data डालना भी होता है. So for that, you actually use insert. Insert will add one row or multiple rows can also be added into the table. Update can update an existing row.
Our delete can delete an existing row. Then we come to DCL. DCL is data control language. Here you can actually control that which user has what sort of privileges. It is possible that you may not want to give every user access to the entire table, and you may not want to give every user access to write data into the database. So for example, कल को Amazon अगर आपको data access देता है for doing doing data queries, right? But उसने आपको admin privileges दे दिए, तो आप basically अपना जाके you can place free orders for yourself on the database also, because आपने database में entry add कर दी and it's now added to the system. I know it's a little more secure than that, but it's a very basic example of why you can't give all privileges to everyone. So Grant can actually control which user has how many privileges, and you can also give them privileges on a single table instead of the entire database. So you can actually select that, okay, this user gets only access to 2 tables, but an analyst gets access to read access to all tables. To read, write, admin, you can actually control these type of accesses. एंड जैसे इफ़ यू कैन ग्रांट एक्सेसेस यू कैन रिवोक एक्सेस ऑल्सो, कि कल को एक रिसोर्स छोड़ के चला गया तो यू कैन रिवोक द डेटाबेस एक्सेस. नाउ कम्स द DQL, which is data query language. So this is what you will actually use in your everyday in your SQL workflow. So this select statement is what we use for getting data from a table. Very basic example: select star from customers. So this simple query will give you all the rows in the customers table. It's not this, there are a lot more things that goes into a select statement, but it's a very starting point of any table. Then we come to TCL. TCL is transaction control language. Now this part of SQL is actually the least used from an analyst point of view, राइट. तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होता है. लेट्स से दैट ओके आई वांट वंस अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, आपने बोला दैट इंसर्ट वन रो इनटू अ डेटाबेस, तो उसको कमिट करना पड़ता है. दैट इज़ व्हेन इट एक्चुअली गेट्स फाइनलाइज्ड, दैट ओके ये अब एक्चुअली चली गई है डेटाबेस में. अगर आप कमिट नहीं करोगे तो वो नहीं जाएगा. then you talk about rollback. For example, you have added a row into a database, but you want to roll it back. कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द प्रीवियस कमिट, तो ये रोल बैक कर देगा उसको, इट विल गो वन स्टेप बैक. एंड सेव पॉइंट इज यू कैन क्रिएट सॉर्ट ऑफ लाइक अ, इन अ वेरी सिंपल सेंस यू कैन मेक लाइक अ स्नैपशॉट कि एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पॉइंट, कि अगर मुझे रिकवरी करनी हो आई कैन कम बैक टू द सेव पॉइंट एंड रिकवर फ्रॉम हियर. तो इट्स लाइक अ टाइम बेस्ड सेव पॉइंट. So this is the different types of query statements that we have. Thank you for watching my session. I hope you liked it. If you have any questions or concerns or suggestions for me, please drop in a comment and I will reach back to you as soon as possible. Once again, thank you for watching, and we will learn more about SQL in the upcoming videos. Thank you.